So refractive index is the ratio of sin I over sin R. ठीक है? So let's just write down the definition for refractive index. So what is refractive index? It is the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. Sine of angle of refraction. Now, how do we denote refractive index? We denote it with small n, and refractive index has no units. Okay? And this refractive index has no units. Now, based on this, what is the formula for the refractive index? It is sin I over sin R. Acha, now please remember one thing. I, और which is the angle of incidence, I हमेशा आपका वो angle होगा which is in the less dense medium. Okay? So I कौन सा होता है? Angle I, or the angle of incidence, is angle in less dense medium. And one more important thing, and that is that angle I will always be greater than the angle of refraction. So angle of incidence must be greater than the angle of refraction. Angle of refraction. Okay. Now let's just take an example. So example may, let's say beta, we have a diagram in which a light ray, so let's say this is a light ray, and the light ray is traveling from air into a glass. Okay? And when the light ray travels from air into the glass, so it makes, this is a normal line, this is the normal line. So let's say it makes an angle of 36 degrees, and when it travels into the glass it makes an angle of 24 degrees. So अगर आपसे वो ये कहता है कि calculate its refractive index, so we will simply use the formula n is equals to sin I over sin R. ये sin आपका वही वाला जो mathematical operation that we use in trigonometry या mathematics में जहाँ पे आप use करते हो, ये वही वाला sin है. तो sin of angle of incidence is 36 and sine 24. So sine 36 divided by sine 24, you can directly put the expression in calculator and it will give you the value for it. So let me just calculate it. Sine 36 divided by sine 24, that gives us 1.45. So the refractive index is 1.45. So the refractive index of the glass is going to be 1.45. अच्छा, now let's take another example जिसमें वो confuse क्या करता है. So अगर आपके पास एक और question आ जाता है बेटा, now this time let's say this is the boundary and this is a ray, this is an incident ray, and the light is actually traveling from glass into the air. ठीक है? So when a light ray travels from glass into the air, it bends away from the normal. So let's say आपको ये angle दिया हुआ है, that is 15 degrees. ठीक है? And let's say this angle is given as 12 degrees. Now if we ask us to calculate
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ आई ओवर साइन आर। अब अपेरेंटली तो लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्लास इनटू द एयर, राइट? ठीक है, तो ग्लास में उसका एंगल है 15 डिग्रीज। दूसरी बात ये, अच्छा मुझे आप देखो, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, राइट? So this angle is actually going to be the angle of refraction in the air. So ये ग्लास से एयर में ट्रैवल कर रही थी, ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज का है। सो ये एंगल क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी 90 माइनस 12। सो 90 माइनस 12 इज 78। सो ये 78 है। अब देखो बेटा, मैंने आपसे एक चीज कही है ऊपर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल होता है जो लेस टेंस मीडियम में हो, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इस फॉर्मूला में वो कंसिडर करोगे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा हो, लाजमी। और देखो, सो लेस टेंस मीडियम में हो या फिर एयर वाला जो भी एंगल होगा, दैट विल ऑलवेज बी कंसिडर एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनता है 15, क्योंकि लाइट ग्लास से एयर में आ रही है। बट फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी द एंगल इन द एयर, ठीक है? एंड दैट एंगल इज साइन 78 डिवाइडेड बाय साइन रिफ्रैक्टेड एंगल, वी विल कंसिडर इट टू बी 15। और दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि ये ऊपर वाला जो एंगल है वो नीचे वाले एंगल से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरीज इन दिस, प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, सो वी गेट 3.78। Okay, now please just remember that the refractive index of the air is 1. उसके अलावा जितने भी मीडियम्स होंगे उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, ठीक है? सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर, नोट, इज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर equals to 1, ठीक है? Refractive index of any other medium is greater than 1. Refractive index of other mediums में we can either have water or we can have glass. So इनका जो refractive index की values हैं, they should be greater than 1. Okay, so this is an important point that we need to remember. One more question we'll discuss, and then we'll move on to the uh, refractive index के लिए एक experiment design करेंगे हम. So we have another question. So let's say we have a glass block. So it's a rectangular glass block and the ray of light is incident at this point. So let's say we have a normal. So this is a normal line. So let's say this angle is 36 degrees. So we have air and this ray is traveling from air into the glass block and then it just bends away from the normal. And let's say this angle is 18 degrees. Okay? Now we have to calculate the refractive index. If anybody can quickly tell me कि I की क्या वैल्यू होगी और R की क्या वैल्यू लेंगे? जी, anyone. So we just have to use the 36 form for 36, and 36 will be taken as the value of I. So this is your incident ray. अच्छा, मैं एक चीज आपको ना हिंट देता हूँ कि ना angle of incidence is the angle between the normal line and the incident ray. तो ठीक है, I'll repeat my statement कि angle of incidence is the angle between the normal and the incident ray. So can anybody tell me कि what should be the value of I? I क्या होगा? एक चीज तो 54. हमें, perfect, good.
So this whole angle is 90 degrees. So if I find out the value of this angle by subtracting 36 from 90, तो 90 में से 36 माइनस किए, we get 54. So this is going to be the angle of incidence. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई हमेशा एयर वाला एंगल यूज होगा और आर हमेशा ग्लास या वाटर. So I is going to be 54 and divided by sine 18, and this way we can calculate the refractive index of this, which turns out to be 2.62. And I already said कि refractive index की जो value आएगी, it should be greater than 1. Okay? Any questions, any confusion? Okay, now let's just move on to design an experiment. So we are about to, let's just design an experiment to calculate the refractive index of a glass block. So design an experiment to calculate refractive index of glass block. Okay, now what we are going to do, beta, we will take a plain white paper. Okay, so let's say we take a plain white paper. Okay, now what we will do, we are going to place a rectangular glass block in the middle. So this is a rectangular glass block. Okay, acha. Once you just place the rectangular glass block, so you will draw lines. ठीक है? इस glass block की ना boundaries draw कर लेंगे. So let's say we will draw these boundaries. 1. So let me call these boundaries as A, B and C, D. Okay. So सबसे पहले we have taken a glass block. So this is a white plain paper and this is a glass block. So this is your glass block and this is a plain white paper. So हमने एक glass block को white paper के ऊपर place कर दिया. Plain white paper. अच्छा. Now, what is the name of the device that is used to produce a incident ray of light? So that device is a ray box. So what we will do, we're going to use a ray box. So this box is a ray box. ठीक है, ray box क्या करेगा? It will produce a ray of light which is going to be incident at the on the surface of the glass block. अच्छा, जिस पॉइंट पे ये रे आपकी इंसिडेंट होगी ना ग्लास ब्लॉक पे, what we are going to do, we are going to draw a normal line at that point. So this is a normal line. ठीक है, अब जैसे ये रे ऑफ लाइट इसमें से पास करेगी, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होगी. So this is going to be the refracted ray, and then when it emerges out from the other end of the glass block, so this is going to be an emergent ray. So this is an emergent ray, and this one is going to be the refracted ray. Refracted ray. This is going to be the angle of incidence, and this small r is going to be the angle of refraction. Okay, so this is how the diagram is supposed to look like. Now let's just write down the instructions. ठीक है? So first of all, place a rectangular
glass block on plain white paper, ठीक है, and mark and draw the boundaries as A, B, and C, D. Okay, and draw boundaries as A, B, and C, D. ठीक है, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक रख देना है ऑन अ वे पेपर और उसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ कर लेना है एज ए बी एंड सी डी. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू, ठीक है, यूज अ रे बॉक्स, ठीक है, टू इंसिडेंट a ray of light on AB and light emerges out from CD. अब क्योंकि जब ये ग्लास ब्लॉक रखा होगा ना, तो जब आप यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट होगी तो अंदर से रिफ्रैक्ट होगी लाइट और फिर वापस बाहर निकलेगी. ठीक है, अच्छा, तो अब आपने क्या किया, यूज अ रे बॉक्स टू इंसिडेंट अ रे ऑफ लाइट ऑन ए बी एंड लाइट इमर्जेस आउट फ्रॉम सी डी. सो यू विल प्लेस टू क्रॉसेस. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे. ड्रॉ नॉर्मल on AB where light is incident and on CD from where it emerges. ठीक है, so you have to draw a normal line on AB where the light is incident and then you have to draw a normal line on CD from where the light just emerges. Okay, अच्छा, तो नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने. नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद mark two crosses x1 x2. These are the crosses या pins कह लो. ठीक है, so place two crosses on the incident ray and two crosses on the, place two crosses on incident ray and emergent ray. तो हमने दो क्रॉसेस इन पे मार्क कर लिए एंड यू कैन जॉइन द क्रॉसेस टुगेदर टू ड्रॉ द इंसिडेंट एंड जॉइन. ठीक है, तो इनको जब आप ज्वाइन कर लोगे तो यू विल हैव द इंसिडेंट रेज एंड द नॉर्मल पॉइंट्स. अच्छा, ये जो पॉइंट where the light was incident on the surface AB, let me call it as point X, and from where the light ray just come out, उसको मैं point Y कर देता हूं. ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, join X and Y to draw refracted ray. So beta, we will join these points X and Y together. Once you join them, मतलब once you will remove the glass block. Remove glass block. पहले आप glass block को remove करोगे. And once you remove the glass block, then you can join these points X and Y together to draw the refracted ray. ठीक है,
Now you will measure the angle of incidence I and R, which is the angle of refraction, and then put the values in the formula. N is equals to sine I over sine R to calculate the value of the refractive index. ठीक है? So now what we are going to do next, measure I is what? I is the angle of incidence, and R is what? R is the angle of refraction. Okay? Okay. So once you have measured, ठीक है, now we have to use the formula. Use formula for the refractive index. What is the formula? N is equals to sine I over sine R. Now we are going to do what? We will repeat the experiment. Okay? So we will repeat the whole experiment by increasing the angle of incidence and measuring the corresponding refracted angles. ठीक है? So let's just say that we are going to repeat experiment by increasing angle of incidence and measure corresponding angle of refraction. ठीक है? एंड उसके बाद मैंने आप लोगों को एक टेबल ऑफ रिजल्ट्स के बारे में भी बताया हुआ है ना, तो टेबल ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास क्या होंगे बेटा? सो द टेबल ऑफ रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी angle of incidence, angle of refraction, which is also measured in degrees. Then we have n is equals to sine of angle of incidence over sine of angle of refraction, and we will perform this experiment, let's say, for 6 different set of readings, और लास्ट में रिजल्ट एनालिसिस में, ठीक है, so let's say we have we can just plot a graph of sine of angle of incidence और sine of angle of refraction. अच्छा, अब आप चाहते तो आप डायरेक्टली खाली ये वाली हेडिंग्स भी दे सकते थे, साथ में आप अगर ये वाली दो हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की अलग और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी एक हेडिंग. सो रिजल्ट एनालिसिस में लेट्स से इफ वी प्लॉट अ ग्राफ of sine of angle of incidence on the y-axis against sine of angle of refraction on the x-axis. So it's going to be a straight line graph that just passes through the origin. और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, इसका जो ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल होगा? दैट विल गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, and on the x-axis if you have sine of angle of refraction, so the gradient is going to give you the refractive index for the last block. जी, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को. सो रिपीट एक्सपेरिमेंट 6 times by increasing angle of incidence and measuring the corresponding angle of refractions. And then at the end, you can just simply, once you have given the table of results, you can just simply plot a graph of sine of angle of incidence on the y-axis against sine of angle of refraction on the x-axis. So a straight line graph that passes through the origin with constant gradient will be obtained, and the gradient of the graph will give you its refractive index. If you have any questions, any queries on this, please feel free to ask. Ji beta, anyone.
Okay, so let's just move on to the next concept, that is about the critical angle and the total internal reflection. So मैं last statement लिख देता हूँ कि plot a graph of sine angle of incidence on y-axis against sine angle of refraction on x-axis. So a straight line graph passing through origin is obtained. हाँ जी, so ये हमारे पास हो गया. Now let's just quickly talk about what is the critical angle and what is a total internal reflection. Okay? Acha. So let's just talk about the critical angle first. Critical angle and what is total internal. अच्छा, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी 2 मार्क की डेफिनेशन अगर हमें एग्जाम में आती है, मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इसके लिए एक अलहदा से फॉर्मूला भी होता है. वी विल गो थ्रू दैट. सो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होती है इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम dense to less dense medium. तो 1 मार्क तो आपको इस बात का मिलेगा अगर आप उसको ये बताओगे कि जो लाइट है इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर इनटू अ लेस डेंस मीडियम. अदर मार्क इज कि इफ एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is 90 degrees, then angle of incidence is called as the critical angle. Angle of incidence is called as critical angle. So, second mark for this point. So, 1 mark, the light travels from dense into a less dense medium. The other mark is if the angle of refraction is 90 degree, then the angle of incidence is called as the critical angle. So, let's say beta, ये एक boundary है. Okay, I'm going to draw some multiple boundaries. मैं 3 ड्रॉ कर रहा हूँ. द फर्स्ट, अब लेट्स से ये तीनों में एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहा हूँ. तो ये तीनों, ये नॉर्मल आ गया. दिस इज अगेन अ नॉर्मल लाइन. ओके, देखो, नाउ वी हैव द ग्लास हेयर and we have air here. Glass is a dense medium, air is a less dense medium. Now let's say beta, if a light travels from dense to less dense medium, it bends away from the normal, ऐसे, राइट? तो ये इसका इंसिडेंट एंगल होता है और ये इसका रिफ्रैक्टेड एंगल है. लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, सो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट विल आल्सो इंक्रीज. दिस इज द अदर रिफ्रैक्टेड एंगल. अच्छा, अब एक पॉइंट आता है, लेट्स से अगर at this point if your refracted ray makes an angle of 90 degrees with the normal line,
तो इस पॉइंट पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, वी डिनोट इट एज अ क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल क्या है कि when a ray of light, when it travels from dense into a less dense medium, and if your refracted angle is 90 degrees, so then the angle of incidence in the dense medium is called as the critical angle. Okay, so this is what the critical angle means. Any questions, any queries in this, please feel free to ask. Now, what is total internal reflection? देखो, if I am going to increase my angle of incidence from the critical angle, तो उस पे क्या होगा कि instead of the light traveling from dense into the less dense medium, the light will be reflected back into the same medium and it will follow the laws of reflection. Okay, so this is called as total internal reflection. So this diagram is for the total internal reflection. Now there's another formula for the refractive index, which is in terms of the critical angle, and that formula is n is equals to 1 over sine c, where n is the refractive index and c stands for critical angle, and small c stands for critical angle. अब 2 मार्क की एग्जाम में डेफिनेशन आती है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल. So what is the definition for total internal reflection? So the total internal reflection. So 2 मार्क, 1 मार्क आपको इस चीज का है कि if light travels from dense to less dense medium. तो 1 मार्क तो यही है ना, सेम जो क्रिटिकल एंगल में भी ये था. सो एक्चुअली लाइट जो है ना वो डेंस से लेस डेंस में जाने की कोशिश कर रही होती है. इफ सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है. सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle, light is reflected back into the same medium. So light is reflected back into the same medium and it will follow the laws of reflection, which is that the angle of incidence and the angle of reflection will be equal. So light is reflected back in same medium and this is called as the total internal reflection. अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन and total internal reflection. I am denoting the total internal reflection with TIR. देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट जो है ना, लाइट travels from dense to less dense medium. जबकि जो सिंपल रिफ्लेक्शन होती है उसमें लाइट ट्रेवल्स इन द सेम मीडियम. लाइट ट्रेवल्स इन
सेम मीडियम, मतलब लाइट का ये एम नहीं होता कि उसने ग्लास में एंटर होना था, उसको पता है रिफ्लेक्शन में कि उसने रिफ्लेक्ट होके वापस उसी मीडियम में आना है। लाइट ट्रेवल्स इन सेम मीडियम। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सिंपल रिफ्लेक्शन होती है, इट कैन अकर एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, occurs at any angle of incidence, whereas जो total internal reflection है, it will only occur at the surface, only occur if the angle of incidence is greater than the critical angle. ठीक है, if angle of incidence is greater than critical angle. अच्छा, सो वील टॉक अबाउट दी, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की जो एप्लीकेशंस है इन द नेक्स्ट लेसन। ठीक है, बाकी लेट मी